Good evening. Now this is audible. Yes. So in last session we have learned how to deploy the simple index.html HTML web page on the EC2 instance, right? Now in today's session we will learn about how to create the Linux instance and how to deploy the simple index.html web page on the Linux instance. Okay. Along with that, we will learn some several commands of the Linux. Clear? Okay. Right. So अभी क्या करना है आपको? You have to share your screen and start. Okay. I just need to do next, right? Right. To log in. Yes. Select root user. Sign in. Scroll down. Skip for now. Skip for This now. one? नीचे. Okay. Skip for now. EC2? हाँ वेट करना अभी देखो जैसे हमने विंडोज मशीन के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे व्हाट स्टेप्स यू हैव फॉलोड we have created the key pair then we have created the security group okay Security group. and then we have launched our instance we had launched our Mm. instance so Instance. first of all what we have to do we have to create the key pair for Linux instance okay so for Linux instance we require a .ppk file. So click on EC2, we will get the options for creating the key pair. Go to dashboard. Key Click pair. create key pair. Provide the name. Linux key key pair. right. और Get इसके लिए the PPK फाइल. ppk file चाहिए. Okay. Create key pair. Create key pair. Next is फिर से create डैशबोर्ड में जाएंगे और सिक्योरिटी group create करेंगे. करना है. Right. Security So group. like we have created the Windows, वैसे हमें Linux SSG create करना है. SSG. Right. Now add the rule. Add rule. Click on add rule. Inbound. So right. So जैसे हमने क्या ऐड किया था विंडोज के लिए we have added the RDP RD. right for हाँ. connection but here RDP is not works we have to add the SSH client or SSH protocol okay so secure shell SSH. okay yes then add another two that is same HTTP and HTTPS HTTP. HTTPS. yes okay अब तीनों का क्या करना है सोर्स चेंज करना है चेंज सोर्स टू IPv4 कस्टम है ना ऊपर हाँ राइट PV4 IP4. IP4. okay roll down outbound rules All traffic. target right scroll down and create
Okay. Now, security group is also created. Go to dashboard, refresh that dashboard. Okay. Now, Up click instance. on launch instance, right? Instance, launch instance. Now select the browser. So that means give the name for Linux machine. So Linux server or Linux machine, whatever you want. Okay. After that, we have to select the Linux image, right? Yesterday we have selected Windows, right? Yesterday we have Microsoft selected, Windows. right? So at the top, different, you can see the Amazon Linux. Okay. So Amazon Linux is a Amazon's operating system that is works with the Linux. Okay. So you have to select the Amazon Linux, that is first one. Already first number पे available. Hmm. There are another options हाँ are also there. हाँ ठीक है, इसको ही select कीजिए. पहला वाला फ्री टियर एलिजिबल. बराबर. बाकी के ऑप्शन है जैसे कि उबंटू है, रेड हैट है, स्यूस है, डेबियन है. दीज आर द ऑप्शंस. नाउ वो हमें नहीं चाहिए अभी. जस्ट हम जैसे उबंटू हम यूज करने वाले हैं आगे. ठीक है. नाउ अभी इंस्टेंस टाइप. ओके. इंस्टेंस टाइप, व्हाट इज इंस्टेंस टाइप? So this is the configuration, right? This is the configuration for your configuration. for Linux your machine. machine. So you can see there is 1 GB RAM and 1 core. CPU is there, 42 micro, right? Now, what Hmm. is the cost? What is the cost? It cost 0. 0.00124 USD per hour, right? 0.0124 USD per hour. But it is a free tier eligible. That means if your account is in free tier, that machine will be free for you. Okay, it will not charge. Hmm. Scroll down. Now select the key pair which is you have created for the Linux machine. Linux key. Linux. Right. Now next is select the existing security group. So that is you have already created for the Linux machine. Select कीजिए उसको. Linux SS. ड्रॉप डाउन में जाना है. अभी थोड़ा स्क्रीन लैग हो रहा है. हाँ ओके. Con. नाउ कॉन्फ़िगर स्टोरेज. अभी देखो विंडोज में हमने देखा था. इन विंडोज दिस इज 80 30 GB 30. था, राइट? हियर इज 8 GB. Hmm. ओके ओके. नाउ हाँ. लॉन्च इंस्टेंस. ओके. It Launch will create the instance. right. It will create the instance for you. So can you tell what is the difference between Linux and Windows? Do you know what is the difference? Yes. Logical difference तो पता नहीं. ओ, दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. Right. Open the notepad. Notepad simple. Maximize that. Click on plus, right? Now, first is Windows, right? And second is Linux. Okay. So now, Hmm. Linux is a first of all, Windows is not open source. Windows is not open source. Linux is Open what? source.
Linux is open source. That means you can customize Linux operating system according to your requirements. Okay. You can customize, you can do the customization with the operating system according to your requirement. That is open source. That code is freely available. Okay. That code is freely available. That's why Linux has more different versions. Okay. Linux has more different versions. Just a minute. पर विंडोज भी तो हम लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं ना, मतलब ये नॉट ओपन सोर्स कैसे हुआ? इसको डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं बस। वो क्रैक्ड वर्जन रहता है, राइट? जो भी आप डाउनलोड करते हो वो क्या रहता है? क्रैक्ड वर्जन रहता है। और कभी आपको विंडोज का कोड मिला है क्या? यस। डू यू हैव द विंडोज ऑपरेटिंग नहीं। सिस्टम कोड? नो। है ना, जिसका कोड ही अवेलेबल नहीं है वो ओपन सोर्स हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हम्म। इसका आपको कोड मिल जाएगा, राइट? सो यू कैन see there are 300 plus distributions are available, 300 plus flavors are available. Okay, Linux के जो है ओके। 300 plus distributions है। Why it is possible? Because Linux is open source. Okay, और अगर आपको विंडोज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 7,000 8,000 पर ईयर। अगर आप लेते पर ईयर मतलब अगर आप विंडोज लैपटॉप नया लेते हो तो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल रहता है ना? तो आप देखो, जो लैपटॉप हाँ। में विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है उसका प्राइस 5-6 हजार ज्यादा रहता है। अगर उसमें से हम विंडोज अगर निगलेक्ट कर दे तो वो सेम वही लैपटॉप अगर उसके अंदर सेंटोस है, उबंटू है, वो लैपटॉप पे 5-6 हजार से सस्ता मिल जाएगा। बिकॉज विंडोज की जो है चार्जेस ज्यादा है। ओके ना? हम्म। ये जो है क्या है आपका? विंडोज जो है वो क्या है आपका? GUI बेस्ड। व्हाट इज विंडोज? विंडोज इज GUI बेस्ड। ये जो है जीयूआई। ये आपका CLI बेस्ड है ना? लिनक्स इज CLI बेस्ड। So that means in Windows you can see or you can view the operations whatever you are going to perform. Like if you want to delete, if you want to rename, if you want to copy, if you want to move, if you want to paste, whatever the operations are there, you can view that operations by your eyes directly. Okay, that means there are हम्म। some options, right? तो क्लिक कर सकते हैं, नोटपैड ओपन करके अभी आपने यहाँ पे सर्च किया, नोटपैड पे क्लिक किया, ओपन किया, राइट? हाँ। हाँ। वो क्या है आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम्म। यू नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड्स, टू एग्जीक्यूट कमांड्स उसको बोलते हैं CLI बेस्ड, है ना? कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके ना? ये हाँ। जो है ये क्या रहता है? हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? विंडोज इज हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ ग्राफिक्स। एंड ये क्या है आपका? लाइट वेट है ना? दिस इज lightweight OS. This is lightweight OS as compared to Windows. As compared to Windows, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। Now next is ये जो है आपका इसका परफॉर्मेंस लो as compared to as compared to Linux, as compared to Linux। इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इज हाई, है ना? as compared to Windows। विंडोज। समझ? तो इसमें जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है
So ये जो है इससे ज्यादा फास्ट काम करता है लिनक्स, ठीक है, विंडोज से। ओके। तो आप देखो जो बिग लेवल के प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, वो विंडोज मशीन पे नहीं डिप्लॉयड होते, वो कहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, लिनक्स मशीन में डिप्लॉय किए जाते हैं। ओके। सो मतलब यहाँ पे अभी भी ओके। हमने देखा, जस्ट EC2 हमने देखा था कि यहाँ पे 30 GB का आपने स्टोरेज लिया था, राइट। थर्टी हाँ। जीबी का स्टोरेज लिया था, यहाँ हम्म। पे अभी हमने जस्ट कितने लिया है, 8 GB का स्टोरेज लिया है। दोनों एट में जीबी डिफरेंस है, राइट। 8 GB स्टोरेज लिया है। दोनों में क्या हाँ। है, लॉट ऑफ डिफरेंस है, इसके जो इंस्टॉलेशन फाइल्स है वो वेरी वेरी लाइट वेट है एज कम्पेयर टू विंडोज लिनक्स की जो है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द विंडोज एंड लिनक्स। विंडोज एंड लिनक्स में बेसिक डिफरेंस हम्म। ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल यूज दैट। नोटपैड यूज करने के बाद, ओके, मैं नहीं ले पाई। हाँ ठीक है, मैं शेयर करता हूँ चैट में, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टेकन दैट स्क्रीनशॉट। ओके। ओके। नाउ ओके। भी देखो, चेक करो कि वो क्रिएट हुआ है क्या हमारा इंस्टेंस। हाँ। हाँ। नाउ इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड दी पुट्टी सॉफ्टवेयर, वी रिक्वायर्ड द ओके। पुट्टी सॉफ्टवेयर, है ना, पुट्टी डायरेक्टली। सॉफ्टवेयर। हाँ, कि हमने जो PPK फाइल सेलेक्ट की है वो क्या है, पुट्टी से कनेक्ट होती है, मतलब ऑथेंटिकेशन पुट्टी में यूज होता हम्म। है। सो नाउ सर्च फॉर पुट्टी डाउनलोड, या एक नए टैब में जाइए और सर्च करना है पुट्टी डाउनलोड। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। डाउनलोड पुट्टी। हाँ डाउनलोड, सॉरी। हाँ एक मिनट, अभी यहाँ पे नीचे देखो 64 बिट। हाँ बराबर, इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल हो गया। डाउनलोड हो गया, इसको रन हाँ। करना है, डबल क्लिक ऑन इट। जैसे विंडोज से कनेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड द RDP, ओके, वी रिक्वायर्ड द हाँ। RDP क्लाइंट। वैसे लिनक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड द पुट्टी सॉफ्टवेयर। यस सुखदा, समझ में आ रहा है आपको? यस। यस। क्या हुआ होगा ऊपर, फाइल को क्लिक कीजिए, नोट पैड के बाजू में देखो, टास्क बार में, टास्क बार में। हाँ वही वही, और टास्क कौन बार सा? में, नोट पैड के नीचे, बाजू, बिसाइड द नोट पैड, टास्क बार में रिपीट फाइल रन हो रहा है। हाँ बराबर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉल, फिनिश। फिनिश। क्लोज कीजिए इस फाइल को। हाँ, नीचे सर्च करना है यहाँ पे, टी। हाँ। यू टी हाँ टी वाई। वो आ रहा है। ओके। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनपुट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पास, यहाँ पे जो है
हमें पब्लिक आईपी पास करना है यहाँ पे। ये जो बॉक्स दिख रहा है, हम्म यहाँ पे हमें पब्लिक आईपी पास करना है हमारे मशीन का। जाइए वहाँ पे कॉपी कीजिए उसको। पब्लिक आईपी। कॉपी दैट कॉपी। हाँ। एंड पेस्ट। वहाँ पे पेस्ट करना है पुट्टी में। हाँ यस, पेस्ट किया। जस्ट मिनट। हाँ, अभी और एक काम करना है। गो टू SSH, यहाँ पे जो प्लस का बटन है, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद यहाँ पे नीचे हाँ। ऑथ है, ऑथ पे क्लिक करना। और क्लिक ऑन क्रेडेंशियल्स, उसके नीचे क्रेडेंशियल्स। रेफरेंस। नाउ ब्राउजर में जाना है, ठीक है, ब्राउज में जाना, सॉरी, ब्राउज में जाना है। और आपको वो की पेयर जो फाइल हमने डाउनलोड किया था, उसे आपको सिलेक्ट करनी है। क्लिक ऑन ओपन। ओपन। हाँ, क्लिक ऑन हाँ। ओपन। क्लिक ऑन एक्सेप्ट। ओके ओपन। ऐसे। हाँ, मैक्सिमाइज कीजिए उसको भी। अब इसका डिफॉल्ट जो यूजर नेम रहता है ना, डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है इसका हम्म EC2 यूजर। यहाँ पे लिखा हो देखो, डिफॉल्ट यूजर नेम इज EC2 यूजर, सो यू हैव टू एंटर इसी EC2 टू डैश यूजर। यूजर, एंटर। यूजर। ठीक है, नाउ इट इज कनेक्टेड। देखो इस पे थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा लेते हैं, सो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ओके। राइट क्लिक। चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग, देन अपीयरेंस, यहाँ पे चेंज है। 16 इज ओके। अप्लाई। अप्लाई। फॉन्ट साइज इज इंक्रीज, ओके। अब यहाँ पे देखो, हाँ। यहाँ पे कुछ कमांड्स हम अभी लर्न करेंगे इसमें। फर्स्ट कमांड इज फर्स्ट कमांड इज अभी यहाँ पे देखो हम कौन से यूजर के अंदर है, EC2 यूजर के अंदर। वी आर इन EC2 यूजर। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू गो रूट यूजर, वी हैव टू गो इनसाइड रूट यूजर। तो रूट यूजर के अंदर जाने के लिए रूट आपके पास यूजर। पहले, हाँ, उसके अंदर जाने के लिए पहला कमांड है आपका sudo, है ना, sudo, नॉट सुडी sudo। sudo यस, s। यू डू यू एंटर। नाउ यू कैन सी, आप EC2 यूजर में थे, अभी कहाँ पे चले गए आप, रूट यूजर के अंदर, रूट यूजर। राइट। यू आर इनसाइड द रूट यूजर। अभी हाँ। रूट यूजर क्या होता है, मतलब यहाँ पे इसको सब परमिशंस रहता है ना, वॉट एवर द टास्क यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो रूट यूजर के अगर आप अंदर हो तभी जाके आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी स्क्रीन को क्लियर करना है तो कौन सा कमांड है, फर्स्ट क्लियर कमांड। ठीक है, क्लियर। क्लियर से स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अभी मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स लर्न करनी है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज PWD कमांड। क्या है PWD कमांड, इससे क्या समझेगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो अभी आप कौन से डायरेक्टरी के करंट अंदर हो, डायरेक्ट। होम/यूजर, होम/EC2 यूजर के अंदर हो। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा जो भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली फोल्डर में काम कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप वेस्कटॉप कुछ भी, जैसे हमारा डेस्कटॉप रहते हैं उस तरीके से समझो आप, ये होम है। ठीक है, तो मान लीजिए हाँ। हमें आज का डेट चेक करना है, सो देयर इज कमांड कॉल्ड डेट कमांड।
उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक द डेट। ओके, देखो वहाँ पे आ रहा है विद द टाइम स्टैम्प, है ना, टुडेज डेट विद द टाइम स्टैम्प। नाउ नेक्स्ट कमांड इज कैल कमांड। इससे आप क्या कर सकते हो, कैलेंडर चेक कर सकते हो। यू कैन सी कैलेंडर इज कमिंग। ठीक है। क्लियर है? यस सुखदा, are you getting my point? यस, समझ में आ रहा है क्या आपको? देयर इज अनम्यूट ऑप्शंस, आप अनम्यूट कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, हमें कोई फाइल वगैरह बनाना है, वांट टू क्रिएट द फाइल। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द टच कमांड। कौन सा कमांड है, टच कमांड। सो टच फाइल का नाम, सो व्हाट इज फाइल नेम, f1 डॉट टेक्स्ट मान लीजिए मुझे बनाना है, f1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर से एक फाइल बनेगी f2 डॉट टेक्स्ट। नाउ फाइल इज क्रिएटेड। हाउ टू चेक फाइल इज क्रिएटेड, देयर इज कमांड कॉल्ड ls कमांड। कौन सा कमांड है, ls। सो दिस इज द लिस्ट एलएस कमांड। राइट, उससे क्या समझेगा आपको कि कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स डायरेक्टरीज इसके अंदर है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे समझा हमें, pwd कमांड है ना, प्रेजेंट वर्किंग पीडब्ल्यूडी। डायरेक्टरी। राइट, और अगर उसके अंदर हमें क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या फोल्डर्स है चेक करना है, तो कौन सा कमांड था, ls कमांड। ओके, हाँ। नाउ अभी आपको यहाँ पे इसे ये समझ में आ रहा है कि ये फाइल कब बना था, है ना, f1 डॉट एक्स, नहीं। f1 डॉट टेक्स्ट कब बना था, उसका टाइम क्या था, डेट क्या था। जैसे विंडोज में समझता है ना, टाइम स्टैम्प के साथ रहता है। हाँ। तो उसके लिए कमांड है आपके, जस्ट उसके लिए कमांड है आपका ls-l। ls के बाद आपको देना है -l, यल यल। आई कैन सी यहाँ पे f1 डॉट टेक्स्ट जो है वो 22 अप्रैल को 13:003 यूटीसी में बना है। दिस इज हम्म। द यूटीसी टाइम, ओके, नॉट आईएसटी टाइम। हम्म। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम्म। जोन नहीं है, ये क्या है, यूटीसी। राइट, तो यहाँ पे 22 अप्रैल को 13 बज के 13:03 को ये बना है। ठीक है, इसे हमें दिखा रहा है यहाँ पे टाइम स्टैम्प। नाउ नेक्स्ट कमांड है अभी, मान लीजिए हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है, वी वांट टू हम्म। क्रिएट अ फोल्डर। सो हाउ टू क्रिएट द फोल्डर, वी कैन यूज द देख mkdir। लिया। राइट, बराबर, mkdir स्पेस डायरेक्टरी का नाम, तो दीजिए कुछ भी। चेक दैट फोल्डर इज क्रिएटेड और नॉट। राइट, हम्म। अब इस फोल्डर को हमें रिमूव करना है। ओके, हम्म। तो rmdir है ना, कौन सा कमांड है, rmdir। सो यूज द rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का नाम क्या है, डायरेक्टरी का नाम, अगर मुझे फोल्डर डिलीट करना है तो फोल्डर। और का नाम लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, हाँ, राइट राइट। अगर मुझे फाइल डिलीट करना है तो rm, f1.txt। वो
वो Okay, okay. फाइल है क्या? आरएम Yes. नहीं हो रहा है। Okay. हुआ. ठीक है ना, क्लियर कीजिए उसको। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए। File. हाँ, फोल्डर फोल्डर। Okay. Make dir folder. बनाया, कुछ भी नाम से, हाँ. फोल्डर एग्जैक्ट मत दीजिए। हाँ ठीक See. है, ना उसके अंदर जाना, हाउ टू गो इनसाइड द प्रैक्टिस, राइट, सीडी CD का। practice. अब यहाँ पे एक फाइल बनाइए, एफ एच। Touch OUCH FILE और demo.txt. हाँ हो गया, ठीक है। अभी आपने इस प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर क्या बनाया है, एक फोल्डर बनाया है, राइट। Demo.txt. हाँ राइट, हाँ. अभी उसमें से बैक आना है, उस फोल्डर में से बैक आना है। उसमें बैक, उससे बैक कैसे आएंगे, सी डी डॉट डॉट, हम्म. राइट। अब एल एस चलाओ तो वहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा प्रैक्टिस करके। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, हाउ टू रिमूव द फोल्डर, क्या कमांड था? Delete. Sorry. Remove. हाँ RMDIR. हाँ कीजिए, होता है कि RMDIR. Practice enter. क्या रहा है, नहीं. फेल्ड हो रहा है, फेल्ड टू CWD. रिमूव। हाँ ठीक है ना, एल एस चलाओ, वो फोल्डर आपको फिर से दिखेगा। आप और एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, हम्म. मतलब एम के डी आई आर प्रैक्टिस टू, यहाँ पे दिखेगा। Make dir practice tool. एल एस, आई कैन सी ls. दो, हाँ, there is two folders are available, practice and practice 2. Now remove the practice 2, हाँ. whether it is removed or not. RMDIR. PRA practice tool. हाँ, execute the ls, ls. रिमूव Delete. हो रहा है। हाँ बट हाँ. प्रैक्टिस रिमूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चेक कीजिए फिर से। फेल टू रिमूव, ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, एक्चुअली वन नहीं है ना वहाँ पे, वन तो है ही नहीं, वन लिखा था आर एम डी आई प्रैक्टिस वन। Oh, okay. हाँ. There's. हाँ, सो क्या आ रहा है, फेल टू रिमूव, directory is not empty. So correctly read for error. What is the error? Directory is Fail to not, remove practice directory not empty. मतलब खाली नहीं. हाँ यस, उसके अंदर क्या है, डेटा है ना, उसके अंदर डेटा है, कौन सा हम्म. डेटा है, फाइल है एक, डेमो डॉट टेक्स्ट करके। और हमने देखा कि प्रैक्टिस हाँ. 2 के अंदर एम्प्टी था वो, है ना, वो फाइल क्या था, हाँ. एम्प्टी था। empty थी. सो हाउ टू रिमूव द नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, राइट। So we can remove, we can do that with the rm hyphen rm space rm hyphen r hyphen r. directory name, enter, Yes. just enter, clear। नहीं हुआ, आर एम हाइफन आर डायरेक्टरी नेम और एंटर, एंटर। अभी भी नहीं हुआ. जस्ट में, ओके, आर एम हाइफन आर एफ, राइट डाउन, आर एम हाइफन आर एफ, एंटर। delete. नाउ, ओके,
So PF means is indicate the force, force delete. Hmm. Okay. So we are going to remove this file. So how to remove non-empty directory? RM file folder name. rm hyphen directory name. Now clear that. Now create one file. So how to create file? Just wait. We first हमने देखा touch. Now there is another way. You can create through. Okay. So create by using the touch. Then I will discuss. Okay. Touch demo.txt. TOUCH touch demo txt. Enter. Now file is created. ls. हाँ. Okay. Now we want to add some data inside that file. Right. We want to add some data inside that file. How to add? So you can use the cat command. You can use the cat command. So cat angular bracket greater than right demo.txt. Now write something. Write directly. So write proper some greeting message so you can understand. Enter. हाँ. Control C. Continue. Okay. Now this is the content inside the file. Now how to view the content? Cat. Yes. Cat text. Now these are the content present inside your file. Okay. Now if you use the previous one command for adding the content, so add another content in that file. Same command. Right, same command. Okay. Write something. I enter control C. Now check. So do you see? Hi Do all. you you can Override. see the file's content will be overridden, right? Hmm. Hmm. So what is the issue? If we write any content, it will append. It will not append that content to the existing content, right? So if you want to append the data, if you want to append the data, then we can use that cat double greater that Okay. file content. Okay, so it will modify the file. It will not Enters. override the file. So write something. Hello world. Control C. Control C. Fresh. Hi all. Enter. Control C. Just print And the now I content. wanted to read it. Right. So you can see हाँ तो फिर the file data is, oh, sorry, the content is append to the existing content. Okay. हाँ. Okay. Now clear that. Once again, just print the data. So this command is used to print the file content, right? Cat demo.txt. Cat